रेमेडीज़ दैट वर्क, इसकी डिस्कशन हो रही है और कई होम रेमेडीज़ के बारे में हमने आप लोगों को बताया है. लेट्स कंटिन्यू. और अनदर थिंग जो लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, क्यूकम्बर अपने आँखों के लिए, जिसे हम खीरा कहते हैं. क्यूकम्बर फॉर आई स्ट्रेन्स. Lie on your back and place one cucumber slice about 1/8 inch thick over each closed eye. Cucumbers contain antioxidants that studies have shown help decrease swelling and relieve pain. Place the slices into a cooler pair every 2 or 3 minutes for up to 15 minutes total. और आपके जो आँखों की मेंटेनेंस है, कभी कभी आपकी आँखें इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, पफ़ी हो जाते हैं, उसके लिए क्यूकम्बर जो है वो सबसे बेटर वर्क करता है. सो मेक श्योर करो कि क्यूकम्बर आप काट के उसको अपने आँखों के ऊपर ज़रूर ला के थोड़ी देर उसे रखो एंड देन चेंज इट एवरी 2 to 3 minutes with a very cold one. That will work for you. इसके बाद another thing, lavender oil for foot odor. कई लोग उनके जो पैर है वो स्मेल करते हैं. जब वो अपने शू खोलते हैं, जराबे और उनके पैर में से एक तरह के स्मेल आता है, बदबू स्मेल, बैड स्मेल. तो कहते हैं जो लवेंडर ऑयल है उसे इस्तेमाल करना चाहिए अपने फुट में. Lavender essential oil not only smells good but also has antibacterial properties that help kill germs. Before bed, rub a few drops of oil onto your feet and massage it in. Pull on pair of socks to protect your sheets. So make sure करो कि आपके अगर पैरों में से स्मेल आते हैं, बदबू आते हैं, तो रात को जब आप सोने जाते हो आप उसे लेवेंडर ऑयल जो है अपने जो फुट है उसमें रब करके जराबे पा के सो जाओ. एंड ये क्या करते हैं, ये सिर्फ खुशबू नहीं देते लेकिन इसके अलावा वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है जो जर्म्स है उसे किल करते हैं. सो अगर आपके पैरों से बदबू आते हैं, यू स्मेल फ्रॉम योर फीट, तो लेवेंडर ऑयल लाना अपने फूट में बहुत ज़रूरी है सो दैट वो स्मेल ना आवे. देन वी हैव चेरीज़. कई लोगों को गाउट की प्रॉब्लम होती है. कहा जाता है कि अगर आप 20 चेरीज़ हर रोज़ खाते हो तो आपके जो गाउट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा. स्टडीज़ के मुताबिक 633 पेशेंट्स के कंडीशन टेस्ट किया गया था और चेरीज़ जो है वो कंटेन करते हैं कंपाउंड्स दैट हेल्प न्यूट्रलाइज यूरिक एसिड. तो जो लोग गाउट से गुजर रहे, कई लोगों का बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड्स की वजह से पैर जो है वो इतना ज़्यादा सूज जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, दे कैन नॉट इवन वॉक. तो चेरीज़ है, चेरीज़ आप अगर 20 चेरीज़ हर रोज़ खाओगे, वो कहते हैं कि जो गाउट का फ्लेयर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और देन यू वोंट हैव दैट पेन. और इसके साथ साथ कहते हैं जो चेरी जूस है वो अर्थराइटिस पेन के लिए भी बहुत अच्छा है. जिनको अर्थराइटिस पेन है उन्हें चेरी जूस ज़रूर पीना चाहिए. देन वी हैड टू पेपरमेंट ऑयल फॉर हेडेक्स. हेडेक्स हर किसी को हो जाता है, किसी को काम का टेंशन है, किसी को कुछ और घर में कोई टेंशन हो गया, किसी को किसी वजह से हेडेक हो गया. पेपरमेंट ऑयल आपको लाना चाहिए अपने हेल्थ स्टोर से. और जो पेपरमेंट ऑयल है, एसेंशियल ऑयल कूल्स द स्किन, numbing the pain of tension, headaches, as well as, according to 2 small studies, mix a few drops with olive oil to prevent skin irritation, then gently massage onto your forehead and temples. जो पेपरमेंट ऑयल है उसके साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल दो तो फिर वो आपको स्किन को नहीं इरिटेट करेगा. कुछ लोगों के सेंसिटिव स्किन्स होते हैं, सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, पेपरमेंट ऑयल के साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर अपने जो टेम्पल्स है, फोरहेड है, उस पर रब करने से आपका जो हेडेक है वो छूमंतर हो सकता है. देन वी हैव शुगर फॉर हिकअप्स. हिचकी. लोगों को हिचकी आना शुरू हो जाते हैं. हम इसके बारे में कई बातें करते हो, कोई याद कर रहा है, कोई किसी को आप याद आ रहे हो, लेकिन कहा जाता है कि शुगर फॉर हिकअप्स, अ स्पूनफुल ऑफ शुगर डजंट जस्ट हेल्प द मेडिसिन गो डाउन व्हेन इट कम्स टू हिकअप्स. इट इज़ द मेडिसिन
Eating the grainy sugar crystal forces you to swallow harder than normal, and this resets your diaphragm. To stop this, person says nutritionist. So अगर आप अपने हिकअप्स हिचकी को दूर करना चाहते हो, अगर आपके पास शुगर है, शुगर खा लीजिए थोड़ा सा, वो आपके जो हिचकी है, हिकअप्स जो है, उसे ख़त्म कर देंगे. नाउ फेनल फॉर इंडाइजेशन. फेनल सीड्स बड़े टाइनी सीड्स होते हैं जिसको हम सौंफ कहते हैं. इसको हम कई बार चाय में भी इस्तेमाल करते हैं, कई लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं. Those tiny seeds that you often see in bowls at Indian restaurants are fennel that contains carminative agents which help expel gas from the intestinal tracts. थोड़ा सा फेनल अपने हाथ में लेकर उसको च्यू करके खा लीजिए. आपको जो गैस की इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी. यूजुअली रेस्टोरेंट्स में आप देखते होंगे सौंफ के साथ, सौंफ टेबल्स पे रखे होते हैं या काउंटर पे रखे होते हैं. इफ़ यू नीड इट यू कैन हैव इट. इसके अलावा वेलेरियन फॉर इंसोमिया. कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है. ये वेलेरियन एक हर्ब है जो हेल्प करता है आपको सोने में विदाउट द हैंगओवर इफेक्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स. जब आप स्लीपिंग पिल्स लेते हो, नेक्स्ट डे आपको पूरा दिन आप हैंगओवर होते हो, आपको पता नहीं चलता कि ये हो रहा, आप ऐसे फील करते हो. लेकिन इसको दूर करने के लिए वेलेरियन हर्ब जो है वो आपको सुला भी देगा, लेकिन नेक्स्ट डे आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इट बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर्स इन द ब्रेन दैट गिव्स यू वॉल्यूम डू. Take 1/2 to the teaspoon of valerian tincture or 2 valerian root capsule 30 minutes before sleeping. आपको बहुत अच्छा calm sleep होगा. इसके बाद we are looking at green tea for joint pain. कई लोग joint pain के बड़े शिकायत करते हैं. यूजुअली हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़्यादा करके ये जो joint pain है वो महसूस होता है. कहते a potent antioxidant found in green tea called epigallocatechin, it's EGCG, may put the brakes on the joint pain and inflammation of rheumatoid arthritis according to a study. So अगर आपको arthritis के इशू है, ज़्यादा करके ग्रीन टी पिया करें. रोज़ाना जब आप सुबह उठते हो, आप कहते हो कि जी आई एम गोना टेक मिल्क टी. मिल्क टी की जगह ग्रीन टी लो. हैव वन अराउंड द आफ्टरनून एंड एज यू लाइक यू कैन हैव ग्रीन टीज बिकॉज वो आपको तंग नहीं करते किसी तरह से. अगर आपको किडनी स्टोन्स है, कहते हैं लेमन जूस. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स ऑकर्स व्हेन oxalate, a compound found in foods such as spinach, bran and french fries. ये build-up करता है urine and sticks to calcium forming crystals. Drinking at least 4 ounces of lemon juice per day could help. Researchers say as citric acid can prevent the crystallization of calcium and oxalate that creates these stones. कई बार हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है किडनी स्टोन्स के, और वो जो दर्द है, जो पीड़ है किडनी स्टोन्स की, ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है. इट्स वेरी पेनफुल. तो कहा जाता है कि ये जो किडनी स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं ज़्यादा पालक खाने से, ब्रान और या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाने से ये बिल्डअप हो जाता है. और जब ये आपके अंदर एक पत्थर की तरह, क्रिस्टल की तरह फॉर्म होता है, तो आप अगर 4 आउंसेस लेमन जूस हर रोज़ पीना शुरू करोगे, तो ये जो सिट्रिक एसिड है, इसके वजह से ये जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हुआ है कैल्शियम की, वो स्टोन को वो डाइल्यूट कर देगा. सो मेक श्योर करो, अगर किडनी स्टोन से आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हो, आप इसको रिमूव करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, तो होम रेमेडी जो आप इस्तेमाल कर सकते हो वो है लेमन जूस किडनी स्टोन्स के लिए. देन वी हैव ऑलिव ऑयल फॉर चैप्ड लिप्स. ये आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों की. जो मौसम है हमारे, कभी ज़्यादा ठंड हो जाता है तो कभी टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो इसके वजह से हमारे जो होठ है वो चैप्ड हो जाते हैं. लाइक
या तो आप उसे कह सकते हो कि वो टोन हो जाते हैं। तो जो ऑलिव ऑयल है, कहते हैं कि एक नेचुरल लुब्रिकेंट है जो हेल्प करता है मॉइस्चराइज करने के आपके लिप्स को। किसी भी तरह के वेजिटेबल ऑलिव ऑयल हो वो भी काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादा करके लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, दैट्स द बेस्ट। अपने होठों को टेयर करने या किसी तरह के चप लिप्स हो जाते हैं, उसके लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करो, इट विल गेट बेटर। देन कम्स मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए। जो मेनोपॉजल सिम्टम्स है ये औरतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। हिप्नोटिज्म फॉर मेनोपॉजल सिम्टम्स। स्टडीज़ के मुताबिक मेनोपॉज हर औरत who had 5 sessions of hypnosis per week experienced 74% fewer hot flushes at the end of 12-week study and did control group. Even better, the women in the hypnosis group reported that the hot flushes they did have were less severe than before. So hypnosis के करने से आपके जो menopausal symptoms है वो दूर हो जाएगा। Then comes ginger for nausea. उल्टी आती है। Ginger can help elevate nausea caused by chemotherapy, morning sicknesses, or motion sicknesses. Although we do not yet understand the exact method that allows ginger to be effective at reducing nausea, it is thought it may work by obstructing the serotonin receptors in the gut that cause it, says dietitians. It also may prompt the body to release enzymes that help break down food. Sip some ginger ale or tea, or chew some candied ginger root. अदरक के जो कैंडी जिंजर रूट मिलते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है, मुझे एक बार इस तरह की सिम्टम्स हो रही थी, उल्टियाँ आ रही थी, आई वाज लाइक यू नो हैविंग नोजिया, फील लाइक आई एम गोना थ्रो अप। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे कहा कि मामा आई हैव सम जिंजर रूट कैंडीज फॉर यू, एंड एज सून एज आई च्यू फ्यू ऑफ देम आई वाज गेटिंग बेटर ऑलरेडी। सो जिंजर इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर नोजिया। इसके साथ प्रेशर फॉर नेक पेन। With your thumb or your fingertips, apply steady pressure on the painful spot on your neck for 3 minutes. Research showed that this simple acupressure techniques help loosen tight muscles to lessen pain. अगर आपको नेक पेन हो रही है, जहाँ पर आपको पीड़ हो रहा है, वहाँ पर 3 मिनट के लिए अपने फिंगर्स के साथ प्रेशर दीजिए, फिंगर टिप्स के साथ प्रेशर कीजिए 3 मिनट्स के लिए। ये एक सिंपल आक्यूप्रेशर टेक्निक है जिससे आपके जो मसल्स है वो लूज़ होते हैं, फिर आपका जो पेन है वो कट जाता है। एवोकाडो फॉर रेजर बर्न, इसके बारे में हम ज़रूर बातचीत करेंगे, बट विल टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं, एवोकाडो बर्न के बारे में बात करेंगे। हेलो, कल सारे बड़े खुश सी। होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ। बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला। लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब कढ़ाई। बस बस हुण नहीं रह जांदा। बार्नीज कढ़ाई वाला है किथे? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416. चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6044494444 604 449 3333। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਪਾਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਖਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 626 3144। For all your legal criminal matters, call Shahid Hanif of Hanif Litigation, 604 626 3144. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 593 1110 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ। 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ Pizza and Curry House, 604-593-1110. ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੰਦਰ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਾਰੇ BC ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 614 3536 604 576 0525। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ, ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵੇਟਰ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਨਿਊ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਉਬਰ, ਸਕਿਪ ਜਾਂ ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ 17665 A ਐਵਨਿਊ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਮਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ, 604 614 3536 604 576 0525। रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स। आप सुन रहे दोस्तों www.mwlive.ca। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे टेस्ट ऑफ लाहौर। कहते टॉक ऑफ द टाउन, जो आपके लिए बेस्ट फूड टेस्ट, जो टेस्ट लाहौर फूड्स की तरह होते हैं, टेस्ट ऑफ लाहौर। और ये है 96 एंड 128 स्ट्रीट के कॉर्नर पर, 9526 128 स्ट्रीट सरी। आज ही कॉल करो टेस्ट ऑफ लाहौर पर 604 498 6555। वीकेंड बफे इनके 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। चना मसाला, आलू दे सब्जी, गोट पाया, बीफ निहारी, सूजी का हलवा, नान, पूड़ी, चाय, सब कुछ 1499 यानी 1499। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ लाहौर पर। खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो चुकी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन पहुंचो जी ब्लैक एंड वाइट ऑटो बॉडी। कॉल करो पुष्मिंदर गुर्म को 604 503 0988। इनका पता है यूनिट नंबर 16B 7823 132nd स्ट्रीट सरी। क्लेम चाहे ICBC का हो या प्राइवेट हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बेस्ट मैचिंग करके देंगे, प्रोफेशनल सर्विस, परफेक्ट कलर मैचिंग करवाते हैं, ब्लैक एंड वाइट आउटर बॉडी। इसके साथ साथ घर रेनोवेट कर रहे हैं, पर्दे नया चाहिए या आप सोच रहे हो कि आपके पर्दे चेंज करना चाहिए, तो बस नाम एक ही याद रखो, ग्रेट ब्लाइंड्स। बेस्ट प्लेस टू बाय मॉडर्न डिज़ाइन ब्लाइंड्स और लार्जेस्ट सिलेक्शन एंड कलेक्शन है इनके पास। इनके शोरूम आज ही विजिट करो लोअर मेनलैंड में, यूनिट नंबर 14 13478 78th एवेन्यू सरी, या कॉल करो 604 503 7007। अगर आप US में हैं तो 3705 ऑबर्न वे, ऑबर्न वाशिंगटन स्टेट, 253 321 7007, या विजिट करो info@greatblindscanada.com। ग्रेट ब्लाइंड्स। अब चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ, और आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर रहे हैं होम रेमेडीज़ जो काम करते हैं, दैट वर्क्स। पहले हमने आपको साइंटिफिकली जेडे अप्रूवल हो गए होम रेमेडीज़ उनके बारे में बताया, और अब चलते हैं जिस तरह से हमने कहा एवोकाडो फॉर रेजर बर्न। You knew the benefits of avocado extended to home remedies. Avocado is rich with vitamins and oils that soften and hydrate skin to relieve the tenderness of razor burn. Apply mashed fruit or avocado oil directly to the irritated skin. आप रेज़र कर रहे हो अपने स्किन पर, चाहे आपके लेग्स, आर्म्स, आप रेज़र बर्न हो जाते हो, तो एवोकाडो, चाहे आप एवोकाडो ओपन कट करके ओपन करके उस स्किन के ऊपर लाओ खुद ही मैश फ्रूट की तरह, या फिर आप एवोकाडो ऑयल भी डायरेक्टली अपने स्किन पे लगा सकते हो, जो रेज़र बर्न है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद
cranberry juice for urinary tract infections. Urinary tract infections अक्सर लोग complain करते हो जाते. A study of 373 women with a history of urinary tract infection (UTIs) showed that those who drank a glass of cranberry juice daily had a 40% reduction in the number of UTIs compared with those who drank a placebo. While other studies have been mixed about the effect of cranberry juice on UTIs, scientists think a compound in cranberry juice can prevent bacteria from sticking to the walls of the urinary tract. So अगर आपको urinary tract infections हो जाते हैं तो cranberry juice आपको रोज़ाना एक गिलास पीना चाहिए. Cod liver oil for vision problems. ये जो oil है ये rich source of omega-3 fats है which increase blood flow to the eyes and decrease the risk of developing glaucoma and possibly macular degeneration. Take 1 teaspoon daily. Cod liver oil पीने से आपके जो आँखों के issues है जैसे कि increase blood flow to the eyes और ये आपको help करेगा to decrease the risk of developing glaucoma. So cod liver oil 1 teaspoon या 1 tablespoon ज़रूर लेना चाहिए daily. और इसके अलावा tea tree oil for zits, इसके बारे में बात करेंगे after quick commercial break. सुनते रहिए www.mwlive.ca. ओहो रात ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ 6045961990 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604572 ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604575 ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ SRS Panorama Realty 6047679992 6047679992 ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971119 ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਰਿਜ LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 2097928128 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे www.mw.life.ca और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो है होम रेमेडीज़ दैट वर्क। होम रेमेडीज़ जो काम करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगला जो होम रेमेडीज़ जिसके बारे में हमने आपको बताया था, टी ट्री ऑयल फॉर जिट्स। In one study, 5% tea tree oil gel was effective as a 5% benzoyl peroxide lotion in limiting acne outbreaks with fewer side effects. So tea tree oil जो है, अगर आपके किसी भी तरह के एक्नी है, ब्रेकआउट्स है, जिट्स है आपके फेस पर, कहते हैं उसको आप अगर लगाओगे तो वो आपको हेल्प करेगा rather than any of the other products जो आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है रेमेडीज़ दैट वर्क। लोग हमेशा कहते हैं हार्ट बर्न रेमेडीज़ क्या है, हार्ट बर्न के लिए रेमेडीज़ क्या है। Alternative for heartburn relieves heartburn at night, clinically proven to help relieve discomfort due to acid reflux and protect the an innovative therapy for acid reflux and heartburn. कौन से रेमेडीज़ है जो सबसे ज़्यादा हार्टबर्न को हेल्प करते हैं? लॉट ऑफ पीपल हैव दैट और लॉट ऑफ पीपल आस्क कि कौन से रेमेडीज़ है जो हेल्प कर सकता है। बेकिंग सोडा फॉर हार्टबर्न। अगर आपके घर पे बेकिंग सोडा है तो वो आपको हेल्प कर सकता है हार्टबर्न के लिए। वन ऑफ द ओरिजिनल होम रेमेडीज़ कहते हैं for indigestion is baking soda mixed with water. The reason it has stood the test of time, it works. Baking soda is a base that offsets the acidity और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। Try mixing half to 1 teaspoon of baking soda in 8 ounces of water and drink it. कहते हैं no, don't overdo it though. Too much baking soda, कई बार हम लोग एक्सक्यूज़ मी, जिस तरह से मैं आपको पहले बताती थी कि कई बार हम लोग रेमेडीज़ जब जानते हैं कि ये हेल्प कर सकता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। डोंट ओवर डू इट। टू मच बेकिंग सोडा कैन हैव नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स इंक्लूडिंग नोजिया, vomiting and diarrhea. If you're pregnant or have a chronic condition like heart disease, high blood pressure or kidney disease, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा बिफोर टेकिंग बेकिंग सोडा, क्योंकि कई बार ये आपको प्रॉब्लम भी करता है। एक सवाल हमेशा होता है, डज मिल्क हेल्प हार्टबर्न? Milk is another old school remedy for heartburn, like calcium-based over-the-counter antacids, like counteracts the acidity of your stomach, says Zemporno. Stick with skim for a low-fat milk. The fat content in whole milk could actually contribute to heartburn. Along the same lines, low-fat yogurt may also ease your heartburn and provide a dose of gut-friendly probiotics at the same time. Apple cider vinegar for heartburn. It seems counterintuitive that something acidic like vinegar could help treat heartburn. But there's a twist. Sometimes a painful sensation occurs if your stomach doesn't have enough acid to help digest the food. The longer food sits in your stomach before being broken down, the greater the risk is that it will cause indigestion and heartburn. A teaspoon of diluted unprocessed apple cider may provide your stomach with the acid it needs to digest the food. It's worth nothing that there is no scientific proof that vinegar trick works, although plenty of people swear by it and it could make your heartburn worse, so proceed with caution. Lemon juice for heartburn. If apple cider vinegar isn't your jam, how about lemon juice? Drinking the juice from a half a lemon may yield similar results like Zampano. It's best to drink the juice before you start eating to help prepare the stomach for the meal to come. Does pickle juice help heartburn? People who find heartburn relief from apple cider vinegar or lemon juice may find pickle juice is another option. In addition to its natural acidity, the juice from homemade pickles contain lactobacillus bacteria, a probiotic that forms in the skin of the pickle when it ferments. The gut-healthy bacteria can sometimes be removed during commercial processing, so make your own pickles if possible.
Mustard for heartburn. Mustard for heartburn may sound far fetched, but many people believe it works. Yellow mustard gets its color from the spice turmeric, which may help ease indigestion. Another benefit, mustard may neutralize some of the stomach acid. People who swear by this remedy usually take a teaspoon of mustard as needed. Chewing gum for heartburn. Zampano suggests that mustard may also work because its tangy taste stimulates saliva production, coating the esophagus and creating barrier from stomach acid during reflux. Chewing gum has a similar stimulating effect on saliva, protecting the esophagus and washing acid back into your stomach. Avoid peppermint gum, which may trigger heartburn. Ginger can help heartburn. If your mother gave you flat ginger ale when you had an upset stomach as a kid, it may have seemed like a treat, but there was a good reason behind it. Ginger has all long been known to help calm stomach troubles, including stomach bloating and acid reflux. Carbonation and added sugar aggravate the stomach though, so you are better off drinking ginger tea. Essential oils for heartburn. Although the power of essential oils to ease heartburn lacks scientific data, that hasn't stopped people from touting its benefits. Edible essential oil most commonly used for heartburn include lavender, lemon, ginger, and orange. Add a drop or two to hot tea or water. Not all heartburn friendly essential oils are ingestible. Eucalyptus essential oil may be used in a differ or in bath water instead, while the jury is still out on how effective these oils are for solving heartburn. There are studies that indicate that can help with issues like stress and anxiety, so there's little downside to giving them a try. Tea for heartburn. A cup of herbal tea can be calming during a busy day and may also help some people with heartburn. Make sure the tea is caffeine free, as caffeine can be a heartburn trigger. In addition to ginger tea, lemon teas are other choices that may soothe the digestive tract and reduce reflux. If you are allergic to ragweed, marigolds, or daisies, skip the chamomile, or as it may cause a similar reaction. What about coffee for heartburn? Get ready for some bad news. For many people, a morning cup of coffee is a strong heartburn trigger. While there is no hard medical research that coffee causes heartburn, there is enough anecdotal evidence it's there to clear if you can't identify the source of your discomfort, or cut it out for a day or two to see how your body reacts. If eliminating coffee eases your symptoms, caffeine may be a trigger. Try decaf instead, or one of these caffeine alternatives. Can bananas relieve heartburn? Some fruits are acidic and can trigger heartburn, but others may provide relief. Bananas are a low acid fruit. They can help soothe and irritate esophageal lining and are high in fiber, which helps keep your digestive tract healthy. Beyond bananas, honeydew melons and cantaloupes are also good for heartburn. They contain magnesium, an ingredient in many over-the-counter heartburn medicines. Eat them on their own or add them to a smoothie. Eat smaller meals slower and more often. If you're eating 3 square meals a day and have heartburn, you might want to mix things up. Too much food at too few sittings may be contributing to your discomfort. Instead, eat 5 or 6 smaller meals throughout the day, chewing slowly and thoroughly to maximize digestion. When the stomach is too full or the food is too fatty, the esophageal valve opens and food and acid move from the stomach back up towards your throat, leading to heartburn. Meals that are more than 500 calories cause more reflux than lower calorie meals. Food that contains more than 10 to 15 grams of fat tend to increase the amount of heartburn. Along with coffee and whole milk, other foods may lead to heartburn, and consider those that should not be taken. If you notice that the burning appears after you eat or drink something specific,
Do a test. Remove the item from your diet for a few days to see what happens. Foods known for triggering heartburn in people include chocolate, citrus fruits, heavy and high fat foods, french fries, potato chips, fast food desserts, mint, peppermint, soda or anything carbonated, spicy foods, tomato and tomato products like tomato paste and tomato sauce. There are two reasons why pregnant women might get heartburn. First, during pregnancy. A woman's body starts releasing hormones that relax abdominal and pelvic muscles in preparation for delivery. This can also cause muscles like the one that controls the valve between the esophagus and the stomach to relax, allowing acidic bile to flow back towards the throat. Secondly, as the baby grows, it puts pressure on the stomach, which can also lead to acid reflux. Avoiding trigger foods may help, along with these other tips to reduce heartburn. Chew slowly and thoroughly to break down the food as much as possible for digestion. Drink your nutrients through protein and fruit shakes. Eat small meals throughout the day. Elevate your torso, not just your head, while sleeping. Speak to your doctor or pharmacist about over-the-counter heartburn treatments during pregnancy. Try sleeping on your left side, which makes it harder for acid to move backward through the esophageal valve. Home remedies are an inexpensive and accessible way to treat heartburn pain. If the first remedies doesn't help, keep trying. Eventually, one of these options will likely work for you. But if your heartburn keeps coming back or you find that it's getting worse, speak to your doctor. Remember, heartburn is a symptom. You may need to treat the problem that is causing it. आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए हम वो रेमेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो काम करते हैं और जिसे आप यूज़ करके प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस अवॉइड कर सकते हो. लेकिन हाँ, हर कोई रेमेडी लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए. इस प्रोग्राम से अब हमें इजाज़त दीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ.